मॉर्निंग सबको सुप्रभात। कल रात को बहुत बरसात हुई तो फर्स्ट टाइम मैं स्लीपिंग बैग में कल सोया। बहुत ठंड था। अभी भी क्लाउडी है, पीछे दिख सकता होगा, स्टिल क्लाउडी। अभी आज भी बरसात की प्रेडिक्शन है। अभी हम गर्मा गर्म लंच कर रहे हैं, पोहा एंड सूजी, दिख रहा होगा आपको पीछे। गाइस लंच कैसा लग रहा है? लंच बोल रहे हैं, सॉरी, ब्रेकफास्ट बहुत ही बेकार। कैसा है ब्रेकफास्ट? बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, एज यूजुअल बढ़िया है। वहां पर दो जन हमारे शॉपकीपर्स बैठे हैं। हेलो, हमारे कैप्टन शॉपकीपर। अंधा था। हेलो, वी आर एंजॉयिंग। हाँ, बहुत एंजॉय हो रहा है। Are you excited for the third day? एनर्जी कैसा है सबका? थके हुए तो होंगे सब? बिल्कुल नहीं। चलिए चल या हमने स्टार्ट कर दिया अपना थर्ड डे। आज का ट्रेक छोटा ही है। पहला दिन तो हमने अराउंड 12-13 किलोमीटर्स किया था, कल अराउंड 9 किलोमीटर्स किया हमने, पर आज का छोटा है अराउंड 4-5 किलोमीटर्स। ये एक्चुअली आपका, क्योंकि हमें पैक लंचेस नहीं दिया कि हम कैंप साइट पर जाके लंच करेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग 1-2 बजे तक आज पहुँच जाएंगे। अभी अराउंड 10 बज रहा है। इनिशियल पार्ट ऑफ दिस ट्रेक इजी होने वाला है, क्योंकि हम कल इसी रूट पर एंड किए थे। प्लेन गांव वाला रूट है। चलिए चलते हैं आगे, पढ़ते हैं कैसा लगता है आगे। मिलता है आज का डे 3 कैसा जाता है। प्रॉब्ली सुना जा रहा है कि वहाँ एक रिजर्वर है जहाँ हम नहा सकते हैं। जस्ट ईगरली वेटिंग फॉर दैट। वहाँ बाकी रास्तों में कुछ नज़ारा आपको दिखाया जाएगा। पीछे दिख रहा होगा, सब आ रहे हैं प्रैक्टिस। The stone, which actually reminds you of gratitude, something which is unique, easy to handle. If you crib about something, you can always find, gratitude in everything. That you stop cribbing about things. It should remind you that you should be happy about everything that you have, and not crib about things that you don't have in life. Yeah, nice. So you can keep it with you while you're sleeping. So it will remind you of this time. If you want get some design done, I'll get it done for my kids, paint it. Also, if you want put it as gratitude, or if you just want some random colors, you put it something unique, and always feel happy when you see this. Okay, you could award a pause. You at least think that you have a good job in hand. And this is what they say is, you can always find something good in everything. Yeah. One of my friend, when she was explaining about her father was in the hospital, and she was really worried. She loved her father, and she was saying that in our group discussion, that how at that moment you're so emotionally stuck, how at that moment I could express gratitude. So she said that the only way that I could express gratitude was, I was thinking that I had the money to at least put him in a good hospital, and I have the hope, and I'll keep my thoughts positive, and I'll have confidence in the doctor that at least you feel you did everything right for him, and some things are not in your hands. He recovered and came back. Nice. Thank you.
जैसे आजकल चल रहा फ्लो वाला फर्स्ट ऐसे वाला फ्लो वाला रात में आप क्या ही कर सकते हैं, समझ में भी नहीं आता ना कि क्या करना है। राम 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 ओ ठीक है, राम 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 ही बोलते हैं। शुक्र, हाँ वो दोनों है। चलो फिर, वो नहीं, बहुत दूर है। उन्होंने वीडियो लेना शुरू कर दिया, वो दिक्कत है। चलो चलो चलो। दूर आपको जो दिख रही है येलो टेंट्स, वो हमारा आज का बेस कैंप, ट्रेक का आखिरी बेस कैंप होने वाला है। भैया इसका नाम क्या है इस जगह का? तेरिया बांध। ये हमारी तेरिया बांध बेस कैंप है। दिस विल बी द लास्ट बेस कैंप फॉर टुडे। कल हम रामगढ़ वापस जाएंगे। बेस कैंप आपको दिख रहा होगा कि एकदम रिवर के बैंक पर है। एक्सपेक्ट नहीं हो रहा कि वहाँ तक पहुँचूँ। मेरे सामने जब रिवर से वायर दिख रहा होगा, गोइंग टू टेक अ डीप इन दिस। चलिए अब टेंट पर जाते हैं, फिर वहाँ कर्म करेंगे। ऑलमोस्ट 4-5 घंटे से चल रहे हैं। लंच आज तो पैक लंच था नहीं, हमारा कैंप पर ही लंच है। जल्दी जल्दी पहुँच कर लंच करना है।
अपने कैंप तुरंत जाके टेंट में जाएंगे, चेंज करके फिर तुरंत नाश्ता करना है। तड़िया बांध फास्ट ओवर बना हुआ है यहाँ पर।